This is a explosion. This is an oil tank explosion. Now we must understand why this oil tank explosion has happened. Very simple method में हम आपको समझाएंगे why this explosion has happened. So this is actually hydrocarbon oil tank में oil store करते हैं. So when this oil gets enough of heat, जब enough of heat atmospheric heat आते हैं, तो this becomes into vapor state. तो वेपर फ्लेमेबल वेपर टैंक के अंदर एक्यूमुलेट करते हैं. देयर इज ऑयल एंड ऑल्सो देयर इज वेपर इनसाइड दैट टैंक. सो व्हेन दिस वेपर मिक्सेस विथ ऑक्सीजन एक एटमोस्फेरिक एक्सप्लोसिव एटमोस्फियर बन जाते हैं. बिकॉज इनसाइड के टैंक में क्या है, वेपर है, दैट इज हाइड्रोकार्बन वेपर है. ओके, देखो पानी अगर आप टैंक में रखेंगे एंड दैट लॉट ऑफ हीट इज देयर, दैट वाटर इटसेल्फ बिकम्स वेपर. सिमिलरली ऑयल में, ऑयल टैंक में व्हेन लॉट ऑफ हीट इज देयर, ऑयल बिकम्स वेपर. सो दिस हाइड्रोकार्बन वेपर मिक्सेस विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज देयर इन द एटमोस्फियर. टैंक के अंदर जब टैंक खाली है, ऑक्सीजन है, तो मिक्सेस विद द एटमोस्फियर, इट बिकम्स एक्सप्लोसिव एटमोस्फियर. एक्सप्लोसिव एटमोस्फियर. तो ये एक्सप्लोसिव एटमोस्फियर में जब इग्निशन सोर्स आता है, लाइक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कभी कभी ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग के प्रॉब्लम के कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं, कभी कभी स्पार्क्स फ्रॉम द इक्विपमेंट, कभी कभी वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, हॉट वर्क प्रोसेस हो सकते हैं. सो देर इज एन इग्निशन सोर्स. इस तरह इग्निशन सोर्स आते हैं, देर वुड बी एक्सप्लोजन. सो दिस इज अ सिंपल method of why this explosion has happened. So now how you can prevent such explosion? So simple thing, you have to do inerting. अगर आप inerting करेंगे, inerting means what? Introducing nitrogen, inert gases like nitrogen and displacing the oxygen. We are displacing oxygen को remove करना process को हम inerting कहते हैं. Ventilation provide करो, forced ventilation if you are giving, that also can remove these vapors, जो accumulated vapors को remove कर सकते हैं. Usage of gas detectors, every safety officers and safety professionals knows. Then ignition control, we have to control the ignition source, like hot work permit इस्तेमाल करो, explosion proof tools and equipment इस्तेमाल करो, grounding and boarding ठीक से करो. In another video we can discuss what is grounding and boarding in detail. Please also comment in the comment box like what kind of topics you want to discuss in detail. Confined space, a procedure properly follow karna, all these systems if you are implementing, you can prevent such explosion. This explosion is very disastrous. Okay, we will see in the